अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो कारोबार है क्या वो हलाल है या वो हराम है। अगर वो हलाल है तो उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, अगर वो हराम है तो उसमें क्या क्या कंडीशंस आती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जी तो फ्रेंड्स, बहुत सारी कंडीशंस है फॉरेक्स मार्केट में, ट्रेडिंग में, बहुत सारे कारोबार में कि जहाँ पर बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं अबाउट हलाल को लेकर या हराम रिस्क को लेकर। तो खुद से बयान करना ये ठीक नहीं है कि ये हलाल है या हराम है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो हमारे मुफ्ती हैं या हमारे जो बड़े उलमा कराम हैं के बजाय हम खुद से फ़ैसला करने के हम उनके बारे में उनसे सुने। ठीक है, तो अभी जो है हम एक क्लिप में आपको दिखाऊंगा कि उस बारे में डिटेल मुकम्मल आपको बताई जाएगी कि किस तरीके से मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं और किस तरीके से ये हलाल तरीके से काम कर सकते हैं और किस तरीके से काम करेंगे तो ये हराम है। तो आपके सामने ये छोटा सा क्लिप है, आप उसको मुकम्मल तौर पर देखें, आपको समझ आ जाएगी कि इसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग में बेसिकली है क्या और फॉरेक्स ट्रेडिंग में हलाल और हराम में क्या क्या फ़र्क कंडीशंस हैं। As far as forex trading is concerned, as far as buying foreign currency and selling it, if you do not break any rules of the Sharia, if you follow all the rules of the Sharia and you're within the rules of Sharia as far as trading is concerned, it is permissible. For example, if a person goes and buys a foreign currency, if you exchange your dollar and buy sterling pounds, and later on, after a few weeks or a few months, the sterling pound goes higher, and you sell that sterling pound back and get a bigger amount of dollars than what you purchased for, it is permitted, as long as it is done on the spot with your own money. But when you do forex trading on a larger scale with different things involved, there are many haram things involved in it. Directly buying from the exchange, keeping with you, then selling as long as it is your money and no other thing, haram thing is involved, it's permissible. But normally what happens in forex trading when you do on a higher level, there are many associated haram things involved. For example, you may book for buying and then you may delay. You pay some money and delay the deal. This is haram. And you pay some money, that's called as riba. You may trade in margin. So you pay only 10% and the balance somebody else pays and then you share the profit with it. Our beloved Prophet said that if you give loan to someone, you cannot involve profit in it. Or if you take loan from someone, you cannot give him profit. So this becomes haram, this becomes riba. So many things are associated with forex trading, especially when you do on a large scale. There may be futures, which is haram. There may be options, which is haram. So as long as no haram things are involved, it is permitted. But many a times, most of the time, when it's done on a large scale, there is borrowing with riba, there is futures, there is options. So these involve haram elements which make it haram. For example, insurance per se is not haram. But the conventional insurance is haram because it involves interest, it involves gambling, it involves things which are not sure. So if it doesn't involve gambling, doesn't involve riba, doesn't involve unsurety, if it's takaful, it's permissible. The insurance per se is not haram. Similarly, trading, buying and selling foreign currency per se is not haram. But because associated things are there, even in online, one important factor is there that if you buy, see it is an on-the-spot transaction. So if you buy on the spot and exchange with the hand, it's permissible. If you are doing online, see to it you get the currency with you on the spot. If there is a delay and if it's later on, futures involved, then it becomes haram. जी तो फ्रेंड्स, ये आपने सुना है, इसमें अब वो बिल्कुल क्लियरली बता रहे हैं कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं। वो शराइत ये है कि अगर आप अपनी डील करते हैं ऑन द स्पॉट तो आप उसमें से जो प्रॉफिट लेंगे वो बिल्कुल जायज़ है। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ से यूएस डॉलर लेते हैं, बाय करते हैं अपने विद योर ओन मनी, देन जो है आप क्या करते हैं, आप 1 वीक लेटर आप उसको पाउंड्स में सेल करते हैं या
या 1 मंथ से बाद सेल करते हैं, ठीक है, या विद इन 2 डेज़ में सेल करते हैं विद योर ओन मनी, तो और आप उसमें से प्रॉफिट बाय करते हैं, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट आप उसमें से लेते हैं, गेन करते हैं, तो वो बिल्कुल एक जायज़ तरीका है, ठीक है। लेकिन इफ़ अगर आपकी जो डील है, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं या ऑप्शंस ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं, तो वो जो है बिल्कुल कतई हराम है, ठीक है। अब वो हराम उसकी कंडीशंस हैं, क्योंकि वो जो डील है वो आपकी बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है। अगर आपकी डील विद योर ओन मनी ऑन द स्पॉट हो, देन जो है आप उसको कह सकते हैं कि वो हलाल है। अगर तो वो आपकी डिले हो जाए, देन जो है वो आपकी हराम फील्ड में आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं, आप इनकी वीडियो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनकी सारी वीडियो जाके देख सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।